Right, sir. Sir, Dr. Rahman sir, it's very kind of you. You accepted our invitation at this forum for this session, sir. In fact, your presence here is giving us a lot of strength in whatever we are trying to do and trying to work for the betterment of the society, sir, through development of leadership and educational excellence among our people, sir. I'm sure, sir, this session will go a long way in supporting us and helping this forum, Flame, to achieve its vision and mission, sir. So, with your permission, sir, I'll start with a small introduction of of the flame, sir. Please. Sir, this forum for leadership and managerial excellence, sir, short form is flame. The logo is Together We Glow, and that's what we are aiming at, sir. We would like to work together with different segments of the society, the academia, the corporate sector, and the individuals, professionals to excel the cause of leadership and management excellence, including education, sir. So the vision for this forum is a credible and a respected forum for leadership and educational excellence, which allies approach with trust and confidence. So this vision is transformed into a mission of provide a contemporary forum for fueling leadership and educational excellence through mutually rewarding and trusted partnerships, leading to professional advancement and capacity building of its allies, thereby living the Flames logo of Together We Glow. Sir, this mission is transformed into a strategy of like Flame believes in trusted and reliable partnerships for continuous development of its allies that enables them to face the contemporary workplace challenges through the weapon of knowledge. This belief is transformed into strategy of developing and maintaining mutually rewarding bonds with allies to empower them to learn skills necessary to solve their problems themselves. Flame, therefore, is not a solution provider. It is rather a dependable working associate in building capacity of its allies that makes them capable and self-determining. So this strategy is then further transformed into five strategic pathways. Uh, the first one is fostering school excellence. Second one is leading innovation in technical and vocational education and training. Sir. Third one is advancement in workplace performance. The fourth being mastery through CPD. And the last being engagement and research and conferences, sir. And the first word of each pathway denotes FLAME, which is the flame, sir. So I'll come to this one by one, sir. The first one is the fostering school excellence. We're looking at uh, the school management. We're looking at setting up integrated school development system. This is a system designed by us of how to develop school as a holistic unit, not in parts and pieces, but as a holistic unit, sir. Then school leadership training, and I'm preparing schools for ISO 21001 certification, sir. We're looking at the faculty development also through various skills so listed here, which will prepare the teachers to handle the present and the future classroom with different skill set. So the next one is the student development, learning skills, IT skills, com skills, presentation skills. These are skills which we believe that students must learn in order to prepare themselves for stepping out into their practical careers or practical lives. Then the development of curriculum through curriculum enhancement and student-centered learning, and then learning resources identification, stakeholder development, sir, to develop systems and processes for development of stakeholder engagement, sir. Next one is the leading innovation in technical and vocational education. We'll be looking at improving the student management through setting up of strategic training and evaluation management system. Again, student leadership training and preparing institutes for ISO 29993. Then faculty development and student development are all the same skill sets which we have identified for the normal education institutes, because students, as far as we see them, are same whether they are in the educational institutes or vocational skills training institutes. Then the curriculum development, learning resource identification, and stakeholder development. As you see, sir, there are six cardinals which you've identified in schools as well as in vocational education training centers. We believe that unless all these six cardinals develop in unison, in steps, until then the real development of schools cannot come in, because we have seen schools focusing on only one or two the cardinals
and just ignoring or just keeping the other cardinals on the back burner, is a result that the important cardinals are unable to catch up with the developments in some of the cardinals, and overall the development effort will not be that efficient, sir. So we believe that in a school, if a school has to develop, it has to develop in all the six cardinals in steps. That is where, sir, the integrated school development system and the strategic training and evaluation management system is aiming at, sir. At integrating all the six cardinals of the schools in one developmental effort, sir. Next one, sir, is the workplace performance and CPD. Enhancement of workplace performance. We're looking at the development of organizational management, again setting up strategic training and evaluation management system and management leadership training, sir. Then the human resource development, job skills training, comms and IT skills, CPD and leadership training, sir. And then the CPD itself is customized continuous professional development opportunities in collaboration with international partners to deepen expertise and sustain professional growth. And the pathways we're looking at are the business leadership management, education and training, healthcare and life sciences, soft skills and human capital development, engineering and industrial skills, technology and digital transformation, and sort of finance and compliance. So this is basically capturing all the important parts, and we're looking at bringing in the international partners with us to bring those well-known, renowned certifications to Pakistani people, sir. Next one is it's a research of which one of the part of research is the Journal of Leadership and Educational Excellence, and because of which we are here today, sir, because we are now issuing our first volume, inshallah, in April this year. So this journal is a tri-annual journal, which will have four sections, four axes. The first one is from the front lines, where we'll be holding interviews of leadership, the interviews of industry leaders, and we will request interviews and we'll publish their thoughts on the policy level, at the front lines level, sir. Then second, we would be the from the field, where we'll gather practical insights by working professional managers, school principals, teachers, and all who will just reflect upon their experiences and publish with us. So the third one is the emerging scholars. We are targeting the research by university students, specifically undergrad students. So we all know that the master students, they have requirement of publishing research, which they do, and they do in high quality journals which are recognized by the HAC. But here we would like to give a place to undergrad students who have got some ideas to publish, some research essays or some articles to publish, their projects to publish. They can publish with us here, sir. And the last one, sir, is the Next Gen Forum, articles for school students. So we are inviting schools up to high school level that students should write articles on education and leadership and management at their level and publish with us. So basically, sir, it is from the classroom to the boardroom, sir, giving a dedicated section to every segment of the society, from school students up to the industry leaders, sir. And this will be, inshallah, a journal of interest for a wider audience, sir. The first volume is coming in April this year, sir. This is a Flame Journal of Leadership and Educational Excellence, sir. And volume one, issue one, is April 2026. And if you look below the book, sir, it says from boardroom to classroom, the four cardinals, sir. That's what we are targeting, sir. And your interview, mashallah, is the starter of the channel, and we are so very pleased and honored कि आपके इंटरव्यू से इंशाल्लाह हम चैनल का आगाज करेंगे, सर. दिस इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रेस्टीज फॉर अस. अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस प्रेजेंस से हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, बिकॉज हमें स्टार्ट बड़ा खूबसूरत स्टार्ट में मिल रहा है, सर. So next one is the conferences, sir, which is a part of research and publishing. So we are planning to hold annual conferences on three themes. First one is Flames Conference on Leadership Excellence. Second one is Flames Conference on Educational Excellence. And the third one is the Flames Young Leaders Conference, sir. The right one, the third one, is again targeting students to give them a platform to talk about or discuss or share their experiences or their thoughts about leadership, sir. That's where we are targeting, sir, inshallah. But these conferences won't be like those which are required by the HEC for the paper presentation, but for the popular literature, if somebody wants to just share his thoughts and all these things. And then, sir, the flame bearers. So who are the flame bearers, sir? So the four are sitting here in front of you, sir. At Flame, we honor excellence by bringing together seasoned professionals. We call them flame bearers, whose expertise ignites growth, inspires transformation, and delivers unmatched value to our allies, while ensuring their contributions are meaningfully rewarded, sir. These are the members, like the four of us that are the which we can call them the co-founders. But other members who are joining us, we're calling them flame bearers. So they'll be here with us, carrying our message to our audience, sir. And sir, as I said, we're looking at the partnerships and accreditations.
Flame is committed to building strategic partnerships and securing international accreditations, aligning with globally recognized standards, creating excellence through world-class standards. And it is coming up. We're trying to just talk to some organizations in UK and Malaysia to partner with us and help us in getting the accreditations to Pakistani audience. That was a short intro, sir. So thank you very much, sir. And inshallah, together we shall grow, inshallah, sir. Inshallah. Right, sir. Now, आपसे दरख्वास्त है, आप कुछ कहना चाहेंगे सर इंटरव्यू से पहले सर? Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for inviting me here. uh, Basically, as you know, I'm a professor of organic chemistry. And just a very quick background, I did my O levels and A levels from Karachi Grammar School. Alhamdulillah, I topped in both exams in Pakistan. Then I did my bachelor's and master's from Karachi University. Again, I had a first class first position in my master's. And I taught for 1 year at Karachi University in the chemistry department before winning a scholarship, the Commonwealth Scholarship for Cambridge. That was in 1965. And I went to Cambridge, did my PhD in 1968. When I was 26 years old, I had done a PhD from Cambridge. And then I was very lucky to be elected as a Don, as a fellow of King's College, Cambridge. They elect 2 persons every year, and they chose me. That was a big honor at Cambridge. So I continued to work in Cambridge for another 5 years till 1973, before coming back to Karachi University and dedicating myself to the building up of this center, which was called the Postgraduate Institute of Chemistry, the foundations of which had been laid by the late Professor Salim Muhammad Siddiqui. And I then carried on and developed it into a very large research center, which exists now. Uh, uh, in the year 2000, I was made the Minister for Science and Technology by President Musharraf, and later I became the Chairman HEC, and that gave me about uh, 8 years of opportunity to do whatever I could in the government to uplift science and technology and the higher education sector. I'd like to show some slides, if I may. Please, sir. So I want to share some slides. Just want to see. Is the sharing option open? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it says share screen. So Yes, I'm sir. pressing that share screen, but a blank is opening up. So I'm not sure. I'm more used to Zoom. Sir, So do you know how to select a s- tab to share? sir, on the share screen, sir, you can select, sir, the select entire screen, sir. Entire screen. Select entire screen. Yes, sir. And then, sir, click when it comes, click entire screen, sir, and you'll get the link for sharing, sir. Yes, I'm just trying to show. So it's not visible properly. Probably, sir, kindly go to the Windows one. There are 3 options given. Probably There's Chrome. one with an arrow in that, which says share screen. There सर भी is a G. एक एरो है सर, नीचे देखें शेयर स्क्रीन का सर, एरो है Arrow है share screen का, जी उसको जी मैं दबा बिल्कुल रहा हूँ. जी So सर. then this is a blank is showing up. It says Microsoft Edge tab, window, and entire screen. So I go to the window, you said. एंटायर स्क्रीन सर, प्लीज सेलेक्ट विंडो एंटायर स्क्रीन. विंडो पे जाए से तो विंडो से हो जाएगा प्रॉब्ली. ओके विंडोज The window में चला गया मैं. And now I have. इसी में आ रही है सर आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन. That's what I'm trying to look at, whether it is coming up. Meet IQ आ रहा है, inbox आ रहा है. नहीं, इसमें presentation नहीं आ रही है. तो आपने खोली भी है सर प्रेजेंटेशन वैसे. जी, मैं एक दफा और देख लेता हूँ इसको. Just a moment. Let me just. So kindly open the presentation. Otherwise, it will appear in that window probably. Okay. Now I have opened the presentation. सर. And now go to share screen and then sir in Windows and then probably it will be visible there.
Okay. It's signing me in again. Let me. Sir, you may ask him to send you an email and then you may share, Sir Iftikhar. वो लंबा चक्कर पड़ेगा फैसल. Okay. He's here, sir. Joining. Sir, yeah. I've rejoined and now I go to window and I go to share. जी सर, अब आएगा सर. Show my screen anyway. Yes sir. Yeah, अभी भी नहीं आ रहा. It doesn't matter. Let me just tell you. I don't need to show the show the slides. I'll just talk to you just like that. Basically, what I was going to say is that during the first 2.5 years that I was the Minister for Science and Technology, we managed to achieve some significant advances. And then later as Chairman HEC, and there was a publication from Scimago International, which is the world's largest ranking agency, which came out giving the rankings of Pakistan in different disciplines. This was published about 1.5 years ago in different disciplines: physics, chemistry, agriculture, biology, and so on. And in the year 2000, we were ranked as at numbers 70, 80, 90, 100 in the world. And then it started changing due to the steps that I took. And now by the year 2024, we are our world ranking subject-wise is now number 17, 20, 21 in the world. So something remarkable has happened in Pakistan. And at the same time, we were about 400% behind India in per capita research output. But now we are about 15% ahead of India in terms of research publications per million population. So there has been a huge change. And whatever I was doing caused deep concern in India. And there was a cabinet meeting held by the Indian Prime Minister on the 22nd of July 2006 on what I was doing in Pakistan. And this was reported on 23rd July 2006. The author in the Hindustan Times, and the author was Neha Mehta, and the article in Hindustan Times was "Spark Threat to Indian Science." Mm-hmm. And it talked about what I had done and how Pakistan was giving a serious threat to Indian science. And so India then decided to also abolish its University Grants Commission and form the HECI, the Higher Education Commission of India. So something very fine has happened. Nature, which is the world's top science journal, published 4 editorials on what I was doing. And I will separately send you the slides which I was trying to show so that you have it with you, which you can print if you like in your magazine or whatever you like. But you'll have exact graphs later on. Right, sir, inshallah. And one of the editorials which they published was on my birthday. It was dedicated to me, and they said it was that I had been a force of nature and that no other country had made such positive changes as Pakistan had during that time. The chairman of the United Nations Commission on Science, Technology and Development, Professor Michael Rohde from Austria, also wrote an article which said that this is an example to be followed by other countries of how the transformation of research in higher education can take place. And there's a book which was published a couple of years ago by an American expert, Professor Fred Hayward, and he also has published a special chapter on Pakistan, described the measures that we took in Pakistan during that time. And so again, I'll send you the relevant chapter by email, describing what happened. So something good has happened in Pakistan, which many people are not aware of, that something excellent has happened, at least in the research scenario. Now, why did that happen? Because when I was the Minister of Science and Chairman HEC,
I decided to focus on faculty development. Universities are not about beautiful buildings. They're about beautiful minds. We don't have a shortage of creativity. So I sent some 11,000 students abroad. On each student, we were spending about 3 to 4 crores of rupees. And they were sent abroad to the world's leading universities in Europe, in the United States. We started the world's largest Fulbright program with 50% of the funds coming from us and the rest from the Fulbright Foundation to send to the Ivy League universities in USA. But that was only half the story. We could send them abroad and they remain abroad. So I took 5 steps to ensure that these students who were selected strictly on merit, and they were selected not by us, but through an exam and then by personal interviews by foreign country from Germany or USA who used to come and go around cities of Pakistan, interview them personally, and they selected them on merit. So, and then to ensure that they return, I did 5 things. One, I completely changed the salary structure and brought in the tenure track system under which the salary of a full professor was about 4 times that of a federal minister in the government. So enormous change in salary structure, but this was based on performance. So they had to be evaluated twice at the assistant professor, twice at the associate professor, and twice at the full professor level by an international panel of experts before being granted tenure. So the tenure had to be earned through productivity and through creativity. That was the first thing. Second, jobs on arrival. One of the most frustrating times for our students is when they come back after a doctorate and there are no positions for them. They're advertising and it takes a year or often more for them to find a position, and they then get frustrated and leave for abroad. So I ensured that the day that they landed, they had an assistant professor salary as an HEC scholar, and we were doing a matchmaking well in advance, a year in advance, so that they could get absorbed very easily. And the universities were told you would not have to pay any additional money for their salary. We will build this into your budget. So that was the second step, jobs on arrival. The third step was a $100,000 research grant for every returning student so that he or she could apply 1 year before returning for a research grant. And so by the time they came back, and even if they were in a weak university, they would have substantial research funding to start research. The fourth was access to a digital library, so that they had we established the PERN program, Pakistan Educational Research Network, which connected all universities in the public sector with high-speed internet access, and then put on that a digital library which had 65,000 textbooks and 25,000 international journals, which were freely available to all the students. And lastly, we had a system under which they could have free access to sophisticated instrumentation. So any student, any researcher could send his samples for analysis for spectroscopic or other measurements to any institution in the country of their choice. The analysis would be done free of charge to them, but the institute providing the analysis would submit a bill to the Higher Education Commission, and we would pay for that analysis. So you had a job waiting for you, you had a research grant, and you had access to literature, you had access to sophisticated equipment, and what else do you need? You know, everything was there. Who doesn't want to come back to Pakistan? Your parents are here, your brothers and sisters are here, but you have to create the ecosystem, the environment for them to come back. The result was that we had a 97.6% return rate of the scholars that we had sent abroad, and simultaneously we attracted many of the people who had been living in USA or Europe to come and work in Pakistan for different periods of time. And there were 600 people who returned, and many centers emerged around them. One example is in the Government University, you have the Abdul Salam Center for Mathematics in Government College Lahore, and there were other examples. So there was a huge influx of professionals who had for 20 years or 30 years in foreign universities, and they came back. So something very nice happened in Pakistan. So this was the scenario till 2008. I've been also, as I said, I'm a professor of chemistry, and my center is at Karachi University. This is now the UNESCO Center of Excellence. This is the WHO Center of Excellence. Professor Salam had established TWAS in Italy, the World Academy of Sciences. It's the TWAS Center of Excellence. And there have been 35 civil awards won by the faculty of my center, which includes 1 Nishane-e-Imtiaz, 5 Hilale-e-Imtiaz, 14 Sitara-e-Imtiaz, and 14 Tamga-e-Imtiaz and Pride of Performance. So one institute in the country winning 35 civil awards. I myself was honored by perhaps the most prestigious award
in science besides the Nobel Prize, which is the Fellowship of the Royal Society. I'm, alas, the only person alive with this award. This was given to me in 2006 when I signed the 365-year-old book of the Royal Society, which also had both signatures of Sir Isaac Newton and Charles Darwin. So I joined that very prestigious family of scientists. And I signed this book with a feather pen. So that was my FRS. I've also got an honorary doctorate of science besides my PhD from Cambridge. And only two people have got honorary doctorates from Oxford and Cambridge. One was Professor Salam and the other is myself. So that's just a bit of a background, I thought, but I'll just stop here and then we can have the rest of whatever time we have for an interactive session. And I'll send you those slides with graphs and so on with actual figures so that you know what I was talking about. सर जज़ाकल्लाह खैर। सर आपने तो हमें खामोश करवा दिया सर, हम क्या पूछें आपसे सर? Anything, fire away. मैंने इसीलिए कहा था मुझे आप पहले से सवाल ना बताइएगा, just fire away anything that you want, I'll be happy to try and answer. इनफैक्ट सर बिल्कुल आपकी इसलिए सर हम लोग बहुत ज़्यादा जो ऑनर फील कर रहे थे सर, एंड इनफैक्ट आपके प्रेजेंस हमारे लिए इतने बड़ा सर हमारे लिए जो ऑनर फॉर अस, हमारे बायसे इज़्ज़त है सर कि हम लोग आज आपके साथ बैठे हुए सर। और माशाल्लाह आपका जो कैलिबर है, आपका जो रेपुटेशन है सर, हु डजंट नो इट, हर किसी को बताया सर कि आपने उसमें अपने कंट्रीब्यूशंस की। माशाल्लाह वी आर सो लकी एंड आई वुड से पाकिस्तान इज सो लकी टू हैव यू सर। सर once again jazakallah khair sir. So abhi sir Fuad will just go ahead with a couple of questions sir, or over to Fuad sir. Thank you. Sir, first of all, heartfelt thanks for allowing us to share the same screen as you, sir. Being in the same box as you is an honor in itself, a great honor for all of us. Sir, वक्त की कमी को देखते हुए मैं कुछ चंद सवाल आपके आगे रखता हूँ, फिर जिस प्रायोरिटी में आप चाहिए उनको एड्रेस कर लीजिएगा। सर, आजकल सर एआई का जमाना है, और मैं उर्दू में सवाल कर रहा हूँ ताकि जब हम ये यूट्यूब पे डालें तो हमारी वाइडर ऑडियंस, सारे हमारे जो लोग हैं वो समझ सकें। सर, आजकल एआई का ज़माना है और जब हम इंटरेक्ट करते हैं अपने कोलीग से अमेरिका में, यूरोपियन वर्ल्ड में, इवन चाइना में, वो कहते हैं कि हम तो फाउंडेशनल लर्निंग के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कोडिंग को, एआई को। इट्स अ फंडामेंटल लर्निंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि कोई लैंग्वेज है या मैथमेटिक्स का बेसिक होता है। उसके मुकाबले में सर जब हम यहाँ पे देखते हैं, अपने स्कूलिंग सिस्टम को देखते हैं और अपने इवन यूनिवर्सिटी सिस्टम्स को देखते हैं, तो हमें कोई ऐसा माहौल नहीं नजर आता कि जिसमें इसकी बाकायदा तरबियत हो और इसको एज एन आइसोलेटेड सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है कि एआई का कोर्स कर लीजिए या एआई के क्वालिफिकेशंस कर लीजिए। तो सर पहला सवाल हो इसके बारे में है कि कैसे हम अपनी बेसिक तालीम में और अपनी हायर एजुकेशन में एआई को ऐसे इनकलकेट करें कि हम जमाने के साथ चल सकें, जो कौमें तरक्की कर रही हैं उनके साथ शाना बशाना चल सकें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी एक लीप फ्रॉगिंग प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप मिस भी कर गए हैं ओवर द ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को, तो परहैप्स एआई और आईटी वो पाथ है जहां आप लीप फ्रॉग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला सवाल ये है सर। दूसरा सवाल जो मैं आपके आगे रखना चाहूंगा वो स्टेम और स्टीम के मुतालिक है सर। अगेन सर, ये आजकल के बज़वर्ड्स हैं, हर इंस्टीट्यूशन इसकी बातें कर रहा है, लेकिन इसका जो रियल एसेंस है स्टेम और स्टीम का, क्या आप समझते हैं कि हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है? क्या हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टेम और स्टीम को जस्टिफाई कर पा रहे हैं और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं? तो ये दो सवाल मैं आपसे रखना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में मैंने एक बहुत बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट बनाया है जो तकरीबन 40 अरब रुपए का है, और इसमें मुख्तलिफ शहरों के अंदर सेंटर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम होंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को सबमिट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में ने इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कर ली है। जो बुनियादी प्रोसेसिंग है, जो फीजिबिलिटी कहते हैं, उसमें करीबन 1.5-2 साल लगे और फिर वो अब एक्नेक के अप्रूवल में जाएगा, लेकिन वो तो अलग से चल रहा है। मैं एक एआई का सेंटर में अपने इदारे में कायम हो रहा है मेरे, जिसमें शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज चाइना और जर्मनी और ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है। दैट इज फोकस्ड ऑन एआई एंड हेल्थ साइंसेज। मैंने एक नई यूनिवर्सिटी कायम की है हरीपुर हजारा में, द पाकिस्तान ऑस्ट्रियन फाखशूले।
ये पाकिस्तान की पहली एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 15 फॉरेन यूनिवर्सिटीज साथ काम कर रही हैं और इनका आइडिया इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन दिस स्टूडेंट्स स्पेंड अबाउट 500 वर्किंग आवर्स इन इंडस्ट्री इटसेल्फ और इंडस्ट्री के लोग आते हैं और ये केपी गवर्नमेंट ने इसको फंड किया था। ओरिजिनल कॉस्ट वाज अबाउट 9.1 बिलियन लेकिन हमने 2 अरब कम में इस यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया और 2 अरब हुकूमत को वापस कर दिए। ये पहली यूनिवर्सिटी है और 4 साल के अंदर 4 साल पुरानी है। इसमें 5,000 स्टूडेंट्स हैं और ये गवर्नमेंट से सेल्फ रिलायंट हो गई है। इट डज नॉट नीड एनी गवर्नमेंट फंडिंग एनी मोर, इट इज वर्किंग ऑन इट्स ओन। तो दिस इज अ मॉडलाइज सेटअप ऑलरेडी एंड इट्स वर्किंग इन हरीपुर। इसी तरह की मैं सियालकोट बना रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी में एक एआई का सेंटर कायम हो रहा है अगेन इन पार्टनरशिप विद अ नंबर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो एआई के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। स्कूल लेवल पे बात करें आप तो खान एकेडमी ने एक खान मीगो के नाम से लॉन्च किया था तकरीबन 2-3 साल पहले, इन विच एवरी स्टूडेंट हैज अ पर्सनलाइज्ड ट्यूटर अवेलेबल। तो अगर आपके मुल्क में अगर 1 करोड़ स्टूडेंट हैं तो 1 करोड़ पर्सनलाइज्ड ट्यूटर, हर स्टूडेंट की अलग अलग काबिलियत होती है, अलग अलग उसकी कैपेसिटी होती है, अलग अलग लर्निंग उसके रुझान होते हैं फील्ड्स में। तो द एआई ट्यूटर देन जजेस हिज वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरियां कहाँ कहाँ हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम एनकरेजिंग फॉर आवर स्कूल्स टू अडॉप्ट दिस। इसके साथ साथ मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसका जो वेबसाइट एड्रेस है उसको नोट कर लें, LEJ लतीफ इब्राहिम जमाल के इनिशियल्स हैं, फिर नंबर 4 LEJ नंबर 4 learning.com.pk, LEJ for learning.com.pk। इस पे आप जाएंगे तो 73,000 कोर्सेज आपको मिलेंगे जिसमें MIT के ओपन कोर्सवेयर हैं, उसमें यूडेमी है, उसके अंदर कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, यूडासिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे कोर्सेज हैं। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, फ्री ऑफ चार्ज है। कोई आपको इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं है। इसको कॉन्स्टेंटली हम डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें जाके आप देखिएगा। तो दिस इज आई एम ट्राइंग टू पब्लिसाइज दिस कि आप स्कूल लेवल में आप इसको इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स इस वक्त मैं कर रहा हूँ इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड दीज आर टेकिंग ऑफ। तो ये जो है आप AI कैन बी, और फिर मैं सब्जेक्ट वाइज भी मैं बहुत सारे मैं लेक्चर, केमिस्ट्री में मैं लेक्चर देता हूँ कि किस तरह AI जो है वो इंटीग्रेट होता है। इसी तरीके से हर एक स्पेशलाइजेशन में AI की एप्लीकेशन इस वक्त अवेलेबल हैं और उनको हमें हमारे असातिज़ा को चाहिए कि वो जाएं इंटरनेट पर देखें, सब मवाद मौजूद है कि व्हाट टूल्स आर अवेलेबल, AI टूल्स, एंड हाउ टू इंटीग्रेट देम इनटू देयर सिस्टम ऑफ लर्निंग। जो स्टेम और स्टीम की जो आपका सवाल था उसमें मसला ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो कोलैप्स हो चुका है। आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें सिवाय चंद प्राइवेट स्कूल्स के मुल्क में, वरना अदरवाइज इट इज़ अ कंप्लीट डिजास्टर। आपको रोट लर्निंग के ऊपर या चीटिंग के जरिए बच्चे पास होते हैं, उनको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होती, उनको ओरिजिनलिटी नहीं होती। तो जो सारे मसाइल हैं वो शुरू होते हैं स्कूल लेवल पर और फिर जाते हैं कॉलेज लेवल पे और फिर आगे जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो ये जो है ये उसकी वजह ये है कि हमने कभी ज़बानी लिप सर्विस तो करते हैं हम तालीम के लिए, लेकिन हमने कभी जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने कभी तालीम को प्रायोरिटी नहीं दी, तरजीह नहीं दी, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान आज जो है कमज़ोर मुल्क है, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी तो है, टैलेंट तो है, लेकिन उस टैलेंट को हमने नर्चर नहीं किया। तो इस वजह से द होल इट इज an excellent example of how a country should not develop its educational system, and there is a complete radical change that is needed। लेकिन वो जब ही हो सकती है जब आपके जो लीडरशिप है उसका विजन हो, वो समझे कि इस मुल्क के आज हम इल्म पर मबनी मईशत, नॉलेज इकोनॉमी के ज़माने में हैं। कुदरती वसाइल की अहमियत कम से कम हो गई है, इंसानी वसाइल जो है, नॉलेज जो है वही ड्राइविंग कर रही है। क्या वजह है कि छोटा सा मुल्क सिंगापुर, कराची से 1/4 आबादी, उसके पिछले साल की एक्सपोर्ट जो थी 400 अरब डॉलर, जबकि कोई कुदरती वसाइल नहीं है उसके पास। 400 अरब डॉलर, हम पाकिस्तान जो है 30 अरब डॉलर पे फंसा हुआ है। वजह यह है कि जो हमारे लीडर्स आते हैं उनको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। अगर आप कहें कि कंट्री की पॉलिसी क्या होनी चाहिए तो एक सेंटेंस में ये कहूँगा, द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी गुड्स, हाई वैल्यू एडेड गुड्स। अगर आप ये पॉलिसी अपनी एक बेसिक हर मिनिस्ट्री के लिए बना लें तो उसमें आपको स्कूल लेवल एजुकेशन भी ठीक करनी पड़ेगी, कॉलेज लेवल भी, यूनिवर्सिटी लेवल भी,
इनोवेशन सिस्टम्स को फरोग देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पार्क बनाने पड़ेंगे, इंसेंटिवाइजेशन देनी पड़ेगी मुख्तलिफ हाईटेक इंडस्ट्री को। जैसे मैं IT का मिनिस्टर था सन 2000 में, तो मैंने 15 साल की टैक्स छूट दी थी, इसी वजह से उसे $30 मिलियन से बढ़ के 3-3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी दैट इज स्टिल टू लो. We should be at least $40 or $50 billion of export in IT. So the system needs very basic changing. और जैसे आपने फ्लेम में बताया, so these are the kind of measures that we need to take, but they will only happen with a visionary government. You need a Lee Kuan Yew or you need a General Park. जैसे Lee Kuan Yew सिंगापुर में, General Park कोरिया में, या Deng चाइना में. You need that kind of visionary leadership in order to move forward. आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट पर है. सर माजरत सर. सर थैंक यू वेरी मच, वेरी इलेबोरेट. आपने बहुत मुझे ये वाजे किया है कि किस तरह ये होगा. सर जो इसमें चैलेंज अक्सर नजर आता है वो ये है कि हुकूमत को सही डायरेक्शन देने की सलाहियत और फिर उस पॉलिसी को कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटेशन प्लान में कन्वर्ट करना. आपने ये करके दिखाया सर. आपने इसने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि आपने न सिर्फ ये कि एक पॉलिसी तरतीब दी, उसको मनवाया हुकूमत से, उसको इम्प्लीमेंट किया और नताइज भी आप लेके आए. तो सर क्या इम्पेडिमेंट ऐसे होते हैं कि ये नहीं हो पाता है? आपका तो एक्सेप्शनल केस था. क्या ऐसी बातें होती हैं गवर्नेंस में कि जिसकी वजह से हो नहीं पाती ऐसी चीजें, बहुत वक्ती असर रहता है, फिर खत्म हो जाता है? जो आपकी लीडरशिप है उसकी क्वालिटी. जो मिनिस्टर्स आते हैं वो सियासतदान होते हैं. सियासतदान, उनके तरजीह ये नहीं होती कि वो मुल्क के लिए कुछ करें, उनकी तरजीह होती है कि किस तरह अपने आप को परपेचुएट करें. HEC ने देखा था कि जो आपके प्रोविंशियल और फेडरल पार्लियामेंटेरियंस थे, कोई 1100 के करीब, उनमें से 200 की तो डिग्रीज फॉर्ज थी, जो डिग्रीज, फेक डिग्रीज लेकर आ गए थे पार्लियामेंट्स के अंदर. करप्शन आम है, कानून है नहीं. तो द प्रॉब्लम इज योर गवर्नेंस सिस्टम. गवर्नेंस सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है, जिसके अंदर सबसे ऊपर, और मैंने इस पे कई आर्टिकल लिखे हैं कि वी नीड अ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, क्योंकि आज का जमाना स्पेशलाइजेशन का है हर फील्ड में, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे AI हो. जो मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज हैं और जो उनके स्टाफ है, दे मस्ट बी द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द कंट्री. हमारे पास अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम में आके और आगे नहीं बढ़ पाते. The reason that I succeeded was that I was very blunt and open with General Pervez Musharraf. मैंने 6 महीने लेट कैबिनेट ज्वाइन करी. परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 99 में आ गए थे, मैं मार्च 2000 में मैंने वजारत संभाली. क्या वजह? उन्होंने बुलाया मुझे कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर बन जाए. मैंने कहा मैं आप क्या, आई यू रियली serious about science and technology? मैं वजीर क्यों बनूं? I am quite happy doing my research with my student in Karachi with my students. तो कहने लगे, well, yes, of course I am serious. मैंने कहा, I want to know how serious you are. उनका जवाब था, how serious do you want me to be? तो मैंने कहा, this serious. एक कागज के ऊपर मैंने पर्चे पे लिखा हुआ था कि फंडिंग जो है हायर एजुकेशन की ये होनी चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी की ये होनी चाहिए. नतीजा, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कई टसल्स हुई शौकत अजीज साहब से, एंड फाइनली आई गॉट माय वे and we ended up with a 6,000% increase in the development budget of science and technology, and then a 3,500% increase of higher education. और मैंने उनसे 3 वायदे लिए before I took up the seat of the minister. सबसे पहले, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मैं जिंदगी में रिसर्च में गुजारी है. मैं हर हफ्ते कराची जाया करूंगा अपने स्टूडेंट्स के पास, उनको गाइड किया करूंगा. Every week I'll go for 1 to 2 days. If you want a minister who is also doing research at the same time, that's my first condition. Then only. Second condition was कि आप ये फंडिंग देंगे, जिसका मैंने कहा. और थर्ड कंडीशन was कि ब्यूरोक्रेसी जो है चीजों को आगे नहीं चलने देती. मैं एज अ मिनिस्टर आई विल नेवर आस्क एनीथिंग, अपने लिए मैं कभी नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मेरे काम अड़ेगा तो मैं आपको फोन करूंगा, और आपको ये वायदा करना होगा कि एज लॉन्ग व्हाट आई एम सेइंग इज जेन्युइन and it is needed for the country, you will act immediately to cut through the bureaucratic red tapes, because the bureaucracy is a big hurdle. तो उन्होंने जब तीनों चीजों को माना तो मैं फिर मिनिस्टर बना, and I must say that he fulfilled all his commitments. कभी भी कोई मसला अड़ता था, और बहुत सी दफा अड़ा,
तो यहाँ तक हुआ कि कई दफा शौकत अजीज साहब को भी डांट पड़ी मेरी वजह से, हालांकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर थे, बट वो मेरे से शिकायत करते थे कि साहब सिर्फ एक शख्स की वजह से डांट पड़ती है मुझे, वो आप हैं। तो मैं कहता मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मेरे प्रोजेक्ट्स अड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ प्योर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स। तो यू नीड टू हैव अ पावरफुल फोर्सफुल मिनिस्टर जिसके जो पैशनेट हो, जो मुल्क के लिए काम करना चाहता हो, who will not say no for take no for an answer, and then things start happening, you see. The problem is that we have a run of the mill. मेरे दफ्तर जो था हायर एजुकेशन कमीशन में एक नेगेटिव क्लॉक लगा हुआ था which was working backwards, और उसमें एक एक सेकंड काउंट होता था लेकिन उल्टा, क्योंकि जब मेरे पूरे हो जाने थे तो वो 0 पे आ जाता, और मैं जो भी आता था तो उसको I used to, we all felt a sense of great urgency to move forward, and that is why we managed to do whatever little we succeeded in doing, because and मैंने जब HEC का जब कानून बनाया, जो कि मैंने ही बनाया था उस वक्त, तो मैंने कहा कि chairman will have zero financial powers. I should not be able to buy a cup of tea for myself with government money. The job of a chairman is vision, strategy, moving the whole area forward in certain directions in national interest. So this was a success story in part. इन पार्ट का मतलब ये है कि रिसर्च के अंदर तो यकीनन ये सब हुआ, लेकिन इसका इम्पैक्ट आम आदमी की जिंदगी पे नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसके लिए अब होना, बिकॉज वी डिडंट हैव द क्रिटिकल मैन पावर देन, बट बाय द टाइम वी वर इन 2010-12 वी हैड द क्रिटिकल मैन पावर। लेकिन उसके बाद फिर एक इकोसिस्टम होता है ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो आम, इकोसिस्टम से क्या मुराद, नंबर एक आपके पास वेंचर कैपिटल होना चाहिए, एंजल इन्वेस्टर्स होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी पार्क्स होने चाहिए, आपके पास इंसेंटिवाइजेशन होनी चाहिए, टैक्स ब्रेक्स होने चाहिए इंडस्ट्री को जो हाईटेक इंडस्ट्री में आए। तो देयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम how the US has done it and how some other countries are doing, how Finland is doing it. You have to put the ecosystem in place so that we can manufacture and export high-tech product. उसके लिए अच्छा schooling, अच्छे college, अच्छे universities, critical thinking, all these come together. And the key thing is high quality faculty at every level. चाहे वो school हो, चाहे college हो, चाहे university. इमारतों से नहीं बनती universities, it is दिमागों से बनती हैं. So that is the single most important thing, and that is our major weakness. जी सर, आई विश सर के आपके इस डिस्कोर्स को हम लीडरशिप तक पहुंचा सकें। डेफिनेटली लीडरशिप इससे बहुत बड़े लेसन ड्रॉ कर सकती है, और आई थिंक अगर करंट जो हमारी लीडरशिप है वो इसका 10% भी कर ले तो थिंग्स विल टर्न अराउंड। इट इज सच एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट ड्यूरिंग योर I met General Asim Munir about 1.5 years ago, gave him a presentation, told him that you are in the wrong path. Pakistan will never succeed this way. आपके जो 60% एक्सपोर्ट्स हैं वो लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स हैं, आपके हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट जो है 1% भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग होती है, अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड इन कंट्रीज लाइक चाइना और मेनी अदर कंट्रीज, 60% जो गवर्नमेंट फंडिंग है वो प्राइवेट सेक्टर को जाती है। हमारे यहाँ 0% जाती है प्राइवेट सेक्टर को। तो द होल सिस्टम इज रॉन्ग एंड योर प्लानिंग मिनिस्ट्री को कंप्लीटली चेंज करने की जरूरत है। You need to bring people who understand what it takes to build a knowledge economy. मैंने इस पे काफी लिखा है, एक पूरा मसौदा भी तैयार कर रखा है, आप चाहिए होगा तो I'll send you that blueprint for transitioning for a knowledge economy. प्लीज सर, वी वुड रिक्वेस्ट दैट। सर, एक और चीज जो आजकल बहुत बात होती है कि दुनिया पूरी में अब स्किल डेवलपमेंट पे बहुत तवज्जो है, और लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ट्रेंड है डिग्रीज लेने का, और डिग्रीज लेने के बाद लोग एम्प्लॉय नहीं होते, मार्केट में इतनी गुंजाइश नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। अगर स्किल्स की तरफ हम डाइवर्सिफाई करें और स्किल्स को मजबूत करें तो शायद ये एक बात है, हमारे पास अपनी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल का ग्रूमिंग भी हो जाएगी और उससे मुल्क को भी फायदा होगा। इस पे सर काइंडली थोड़ा इंसाइट दीजिएगा। जी, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। वन लेवल इज कि मैट्रिक के लेवल के जो बच्चे होते हैं या यंग एज के, उनको आप इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंट्री और दूसरी चीजें जो है वो आप सिखाएं। उसके लिए मैंने काफी कोशिश की, हालांकि मेरा अम्ब्रेला में नहीं था ये, तो चाहे वो नैफटेक है या टेफ्टा है पंजाब में, इस तरह के आपके पास 1000 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स हैं। इसके लिए मेरी तजवीज ये थी कि आपको इनमें से 40 को कन्वर्ट कर देना चाहिए इनटू हाई लेवल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स। और ये टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं
ये लिंक हो with the top schools in training schools in China or in Australia or in other countries, और वहाँ से ये टीचर्स ट्रेन होकर आए और वो फिर यहाँ से फिर इनकी फैकल्टी डेवलपमेंट और फिर यहाँ से टॉप क्लास टीचर्स उनकी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स के निगरानी में टू मेक श्योर वो कंट्रोल करें बाहर के पार्टनर्स in terms of the kind of exams that we are holding, that are we reaching their standards, और वो accreditation दे, equivalence करें और accreditation दे। ये 40 अगर या 20 भी आप बना देते हैं इस तरह के टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स, और इनसे जो टीचर्स क्वालिफाई होकर निकले विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, इनको अब्सॉर्ब करें into those 1000 टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल जो आपके पास है मुल्क के अंदर, क्योंकि इसमें अगर अच्छे असातिज़ा जाएंगे और उनको फिर आप फंडिंग करेंगे, the whole thing can change. So I talked to the Australians, I talked to the Chinese. NAFTEC में हसन साहब होते थे, उनके जो उसके चेयरमैन थे, उनके साथ बैठ के मैंने 2-2 घंटे लगाए convincing the partners to come in. But unfortunately, there was a lack of interest on the part of the Ministry of Education. There was जो लाहौर में टेफ्टा है, उन्होंने मेरे से कहा कि साहब ठीक है आप ट्रेन कर दें, लेकिन हम इनको जो ट्रेन करेंगे आप वो अपने टीचर से भिजवाना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, मैं ओपन कंपटीशन से टीचर सेलेक्ट करूंगा। इफ यू जस्ट सेंड वेरी वीक पीपल अब्रॉड, तो देन रबिश इन रबिश आउट। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। तो नंबर 1 ओपन सिलेक्शन हो, उसमें आपके टीचर भी compete करें, जो बेस्ट है उनको सेलेक्ट किया जाए, उनको भिजवाया जाए, ट्रेन किया जाए और फिर वापस बुलवाया जाए, नंबर 1, and they have to be absorbed then into the system. So they did not agree to this, they were confining. So then I because you have to start from ground zero. ये पाकिस्तान ऑस्ट्रियन फाखशूली जो मैं जिक्र कर रहा था, जो मैंने हरीपुर में बनाई है, आपको मौका मिले तो जरूर विजिट करिएगा। इट इज अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस फॉर पाकिस्तान। और इसी तरह की मैं समरियाल सियालकोट में बना रहा हूँ, जो 400 एकड़ पे एक एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बन रही है। तो स्किल डेवलपमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस इज लो लेवल स्किल्स। तो एक ये हैं जो मैंने टेफ्टा और नैफटेक वगैरह की जिक्र की है कि क्वालिटी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स, and then these teachers being absorbed, and then international accreditation को link करें और फिर उसको develop करें. So there is a very clear path in my mind how we can use teachers training. The next is higher level teachers training. वो होते हैं यूरोप में फाखशूले कहलाते हैं, ये जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में वगैरह। तो I've been lucky to get the highest civil award from Austria also. So I convinced the Austrians to come in and establish the Pakistan Austrian University in Haripur. It is only about 45 minutes from Islamabad. तो किसी वक्त आप जाइएगा, इट बी वेरी प्लीज। और वो जो है वो ये 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम है जो स्किल्स के ऊपर है, हाई लेवल स्किल्स, बट दीज आर देन एक्रेडिटेड बाय द पार्टनर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इसके अंदर 3 यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रिया की हैं, 3 बरतानिया की हैं, 7 चाइना की हैं और 1 जर्मनी की है। और ये मिलकर ये सारा उसमें टेक्नोलॉजी पार्क है जिससे ये चल रहा है। कि दोनों लेवल्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। लोअर लेवल पे जैसे मैंने कहा थ्रू टीचर्स ट्रेनिंग, और हायर लेवल पे थ्रू सेटिंग अप फाखशूलेस। So this is the only फाखशूले in Pakistan, in the whole region actually. They done in India also. और दूसरा जो मैं बना रहा हूँ वो समरियाल सियालकोट में, जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर मंजूर किया। और कराची के लिए मैं अभी कल परसों में मिला था कोर कमांडर से टू सेट अप अनदर सच हाई लेवल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इन पाकिस्तान एज वेल। इट्स अमेजिंग टू हियर सर कि आपने न सिर्फ हायर एजुकेशन बल्कि स्किल पे भी इस हद तक इन्वेस्ट किया और इतनी सक्सेस अचीव की है। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू दिस फोरम आई थिंक वील ब्रिंग ऑल दीज सक्सेसेस टू प्रोमिनेंस, अपने अवाम नास तक पहुंचाएंगे इस बात को कि कितना कुछ आपने इस फील्ड में भी अचीव किया। सर एक आखिरी सवाल मैं कहूँगा टाइम की किल्लत को देखते हुए कि यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री, इनका जो सर एक बंधन होता है, एक लिंकेज होता है, वो हमने वेस्ट में, चाइना में बहुत प्रोमिनेंटली देखा है कि इंडस्ट्री की रिसर्च यूनिवर्सिटी करती है और उसको इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती है। स्टूडेंट्स का भी फायदा होता है और यूनिवर्सिटी का भी और इंडस्ट्री का भी। इस मॉडल पे क्या पाकिस्तान में कुछ हुआ है सर काम, और कैसे देखते हैं आप इसको? जी, ये जो फाखशूले बना रहा हूँ वो यही चीज है जो आप कह रहे हैं। दैट इज प्राइमरीली इंडस्ट्री ड्रिवन। ये जो हमने यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं उसमें हम 1-2 साल लगाते हैं इंडस्ट्री के साथ गहरी डिस्कशन में। जैसे जो मैं समरियाल सियालकोट देख लीजिए जो बन रही है एचफल यूनिवर्सिटी, वहां पे मैंने 1.5 साल लगाया पहले
जो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स, गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स, उनके इंडस्ट्री से बैठ के क्या आपकी जरूरियात हैं, क्या करना चाहिए, किन फील्ड में आपको हाईटेक प्रोडक्ट्स चाहिए, फ्यूचर विजन क्या है, क्या एक्सपोर्ट करना है, उनके सामने बैठकर जब हमने तय कर लिया कि हाँ दीज आर योर प्रायोरिटीज, तो फिर हमने ये यूनिवर्सिटी इसी तरह मैंने वहां पे किया जो हरिपुर में। तो उसके नतीजे में इंडस्ट्री इज डीपली इन्वॉल्व। टेक्नोलॉजी पार्क के लिए $10 बिलियन हमने रखे फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। और दिल जो है उस यूनिवर्सिटी का वो टेक्नोलॉजी पार्क है। इंडस्ट्री के लोग आते हैं, वो पढ़ाते हैं यहाँ पर, जो उनके हैं बच्चे जो है, हर बच्चा जो है 500 घंटे 500 वर्किंग आवर्स ही मस्ट स्पेंड इन इंडस्ट्री एज अ मैंडेटरी, as a part of his training. No other university in Pakistan does that. So industry is deeply ingrained. तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की वो इस मॉडल पे जाएं, और केपी गवर्नमेंट ने अब ऑर्डर भी इशू किया है कि उसकी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो ये मॉडल जो मैंने एस्टेब्लिश किया है इस पे जाएं, ताकि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरेक्शन ज्यादा गहरी हो। तो हमें इट हैज टू बी अ नीड ड्रिवन अप्रोच। हमारे यहाँ नंबर एक तो ये कि हम सप्लाई ड्रिवन अप्रोच होता है। हम जाते हैं, हमने कोई लेबोरेटरी में कुछ कर लिया, इंडस्ट्री के पास चले जाते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, दैट डजंट वर्क। सबसे पहले तो उसको आपको स्केल अप करना पड़ता है पायलट लेवल पर, फिर आपको एक बैंकेबल फीजिबिलिटी बनानी पड़ती है कि एक डॉक्यूमेंट कि आप इतने पैसे लगाएंगे तो इतना आपको कमाई होगी, और ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए एट ए पायलट प्लांट लेवल, नॉट ऑन जस्ट अ टेस्ट ट्यूब लेवल। तो पायलट प्लांट फैसिलिटीज मिसिंग हैं। फिर आपके पास स्टार्टअप के सिलसिला जो है वो बिल्ट इन हो चाहिए, इंटीग्रेशन इनटू द इंस्टीट्यूशन। जैसे मेरा जो कराची में सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, इसमें 20 रिसर्च बिल्डिंग है। पाकिस्तान तकरीबन 500 स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं। 120 स्टूडेंट जर्मनी से आ चुके हैं इसके अंदर ट्रेनिंग के लिए। जर्मनी अपने स्टूडेंट पाकिस्तान भेज रहा है मेरे इदारे में टू ट्रेन देमसेल्व्स। इसके अंदर 2 बिल्डिंगें हमने बनाई हैं जो कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, उसमें इस वक्त 50 कंपनियां काम कर रही हैं, यंग स्टार्टअप्स। उनको मेंटोरिंग करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं इन डिफरेंट फील्ड, सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं, उसमें आईटी भी है, दूसरी भी फील्ड भी है, एग्रीकल्चर, एडवांस एग्रीकल्चर वगैरह भी है। तो वी हैव बिल्ट इन स्टार्टअप्स विद इन द इंस्टीट्यूशन। एक अलग से बिल्डिंग हमने बनाई है विच इज फॉर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरेक्शन, जिसमें इंडस्ट्री की सारी नीड्स जो है वो हमारे पास आती हैं। तकरीबन 600 इंडस्ट्रीज को हम इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट से। सो यू नो वी हैव बिल्ट इट इन, इंटीग्रेटेड इट इनटू आवर सिस्टम। Our focus is not just on publishing research papers, but on solving national problems. अब जो कोविड आया तो कोई सेंटर नहीं था मुल्क के अंदर, एक सेंटर था, वो मेरा था, जहां हमने एक वायरोलॉजी का सेंटर बनाया हुआ था। और वो फिर सबसे ज्यादा जो कोविड के टेस्ट कर रहे थे वो हम कर रहे थे यहाँ सिंध के अंदर। इसी में मैंने अपने वालिद के नाम से जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च कायम किया विद स्टेट ऑफ द आर्ट जीन सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम मॉनिटर कर रहे थे कि कोविड जो है अपने जो साख्त जो है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरह तब्दील हो रहा है, जो म्यूटेशंस हो रही हैं उसके अंदर। इसी के अंदर हमने फोरेंसिक लैब बनाई जो सिंध के लिए सारी फोरेंसिक टेस्टिंग कर रही है। सारे सैंपल सिंध के यहाँ आते हैं फोरेंसिक टेस्टिंग के टू माय सेंटर। और इसकी वजह से जो क्राइम, जो कन्विक्शन रेट था क्रिमिनल्स का, वो सिंध में सिर्फ 3% लोग जो होते थे वो कन्विक्ट होते थे। अब क्योंकि हम डीएनए टेस्टिंग ऑफर कर रहे हैं तो वो बढ़ के 15-16% तक पहुंच गया है। अ मेजर चेंज हैज टेकन प्लेस एंड आई वुड लाइक सिमिलर फोरेंसिक सेंटर्स टू बी सेट अप across the country. So this mindset, university industry interaction ka, that has to be ingrained into the leadership, the vice chancellors, into the faculty, and into the students. Students passing out should not be job seekers, they should be job givers. They should know how to make a business plan, how to turn an idea into a product and process, how to go and set up a small company and a startup. तो ये 40-50 कंपनियां जो मेरे अपने इदारे के अंदर यंग स्टार्टअप्स काम कर रही हैं, यंग लोग हैं और वो खुद उन्होंने कंपनियां बनाई हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं बाय ग्रुप्स ऑफ मेंटर्स। So that is a model that we need to take forward and that needs to be replicated across the country. तो मैंने अपने इदारे में तो कम करके दिखाया है, और उस पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में जो जिसका मैं अभी भी स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, वहां भी करके दिखाया है। लेकिन these are just models. We need to replicate them across the country, for which you need to have, as I said, a visionary leadership which takes this forward, because I don't have the powers at the moment, administrative powers to do this in the country.
जी सर, जैसे आपने कहा कि ये तमाम मिसालें आपने कायम की हैं और इन मिसालों को देख के अगर लोग चाहें तो पॉलिसी मेकिंग बेहतर कर सकते हैं और रेप्लिकेट करके नेशन वाइड इम्पैक्ट दे सकते हैं। आई विश सर कि हमारे इस छोटे से फोरम से भी ये आवाज़ आपकी आगे पहुंचे और मैक्सिमम लोग आपका पैगाम सुन सकें और इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह पॉलिसी मेकर्स तक भी हम पहुंचे और उनको भी इम्पैक्ट करें। सर विद दिस मैं दो तीन चीजें आपसे कहना चाहूंगा, अगर 2-3 मिनट मुझे और दे दें। जी जी सर, प्लीज प्लीज सर। आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, जैसे मैंने शुरू में कहा। और क्या हो रहा है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मैं 3-4 मिसालें दूंगा आपको। कुछ साइंसदान देख रहे थे कि सितारों के अंदर पॉलीसाइनो एसेटिलीन्स किस तरह बनते हैं। उन्होंने उस केमिस्ट्री को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की और ग्रेफाइट को गर्म किया हॉट लेजर से। एक नया मुरक्कब इजाद हुआ जिसका नाम उन्होंने बक मिनिस्टर फुलरीन, बकी बॉल्स रखा, जो कि फुटबॉल की शक्ल का था, जिसमें 5 मेंबर और 6 मेंबर। आज ये $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है। The field of graphene, which is 200 times stronger than steel, by just scientists discovering something like that. Number one. Number two, gene editing technologies, जो अभी नोबेल प्राइज दिया गया है, उसमें ये क्रिस्पार कैस और इस तरह की हजारों साल लगते हैं नई स्पीशीज को इवॉल्व होकर सामने आने में। अब चंद हफ्तों में आप स्पीशीज क्रिएट कर सकते हैं अपने लेबोरेटरी में थ्रू जीन एडिटिंग। कुछ साइंसदानों ने जुगनू के जो जीन्स हैं जिससे वो चमकते हैं, उनको फूलों में डाल दिया है और अब फूल ऐसे बन गए हैं जो जुगनू की तरह चमकते हैं। मटेरियल्स इंजीनियरिंग में जाएं, आज मैं आपके ऊपर लिबादा उड़ा दूं, एक गिलाफ उड़ा दूं, एक मटेरियल जो मेटा मटेरियल कहलाता है, META, मेटा मटेरियल, तो आप बैठे बैठे गायब हो जाएंगे। किस तरह? वो रोशनी टकराएगी आपको और फिर घूम के आपके पीछे से आगे निकल जाएगी। तो ये these are meta material, they are being used for stealth purposes by the army and navy for hiding tanks or submarines or whatever, and these are in big demand. Intelligent materials आ गए हैं जो अपना शेप याद रखते हैं। कल आप गाड़ी में जा रहे होंगे, आपकी गाड़ी की टक्कर होगी, उसमें डेंट पड़ जाएगा, आप मुस्कुराते रहेंगे क्योंकि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बिकॉज it has memory, it will know what the original shape was and will restore itself. ऐसे मटेरियल आ गए जो सेल्फ हीलिंग है। आप गोली चलाएं, छेद हो जाता है, जैसे कि आप टर्मिनेटर फिल्म में देखते थे, अब वो खुद ब खुद सही हो जाता है, बिकॉज दीज आर सैंडविच मटेरियल्स। तो दिस इज देयर। आपके जो ब्रेन है, ये मेरी रिसेंट रिसर्चेस हैं ऑन द केमिस्ट्री ऑफ थॉट। Thoughts are not abstract, they are made of atoms and molecules. So there's a lot of been published on where they are stored, but how they are stored is not well known. What is the chemistry of thought storage? तो ऐसे चिप्स इजाद हो गए हैं। जो टेस्ला गाड़ी के जो CEO हैं, उन्होंने एक चिप बनाया, उसने कंपनी बनाई है न्यूरालिंक के नाम से। एलॉन मस्क, उन्होंने न्यूरालिंक के नाम से कंपनी बनाई है। वो ऐसे चिप्स बना रही है जो दिमाग में इंसर्ट कर दिए जाते हैं और वो जो है वो जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, जैसे कि एपिलेप्सी है और दूसरे डिजीजेस हैं, डिप्रेशन है, उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो वो जमाना आ रहा है कि आप ये चिप्स जो हैं, सारा जो इल्म आप 25 साल में 50 साल में हासिल करते हैं, वो एक छोटे से 5 मिनट में चिप इंसर्ट हो जाया करेगा एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ योर मेमोरी। दैट इज नाउ कमिंग। इसी तरीके से हजार तब्दीलियां हो रही हैं तकरीबन हर फील्ड के अंदर। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? नॉट माइक्रोसॉफ्ट, नॉट एप्पल, नो, दे आर ऑल गॉन। व्हाट इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड? इज कॉल्ड एनवीडिया। एनवीडिया जो है वो क्या करता है? $4,500 अरब की कैपिटलाइजेशन हो चुकी है उसकी। इट हैज बीटन एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल दीज कंपनी, गूगल वगैरह को बीटन देम हॉलो। और अब जो है 2-3 महीने में उसकी $5,000 की कैपिटलाइजेशन, $5,000 बिलियन, $5,000 अरब की कैपिटलाइजेशन हो जाएगी एनवीडिया की। तो इन एवरी फील्ड ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। यू आर गेटिंग फैंटास्टिक डेवलपमेंट्स। और ये हर जो फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एडवांस्ड एग्रीकल्चर, आपके सेंसर, बायो सेंसर्स आ गए हैं ताकि पानी 1/3 इस्तेमाल होता है। नॉर्मल जो सेंस करते हैं कि कितने पानी की जरूरत है, कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, कितने पेस्टिसाइड की जरूरत है। नेक्स्ट जनरेशन जीनोमिक्स का मैंने आपसे जिक्र किया, तो बहुत सारी डिजीजेज जो जेनेटिक डिजीज है वो सॉल्व की जा रही हैं। AI की तो आपने सॉफ्टवेयर की बात करी थी, हार्डवेयर के अंदर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है और उसमें अब गूगल ने एक चिप निकाला है वेलो के नाम से, इसी तरह चाइनीज निकाला है कि जो चीज आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 25 अरब साल लगाएगा सॉल्व करने में प्रॉब्लम,
जो नॉर्मल जो बाइनरी कंप्यूटर्स फास्ट जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं, वो ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ये चंद सेकंड में वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो एक बहुत बड़ा इनकलाब इस वक्त आ रहा है। एक तरफ तो एआई डेवलप हो रहा है और एक तरफ क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलप हो रहा है। जब दोनों मिलेंगे तो फिर देन यू विल हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट सिविलाइजेशन। तो देयर इज अ सिविलाइजेशनल चेंज दैट वी आर इन द मिडल ऑफ। ये हम समझ नहीं पाए पाकिस्तान में कि दुनिया कहाँ जा रही है और क्या हो रहा है, कि ये कंपनियां जिनका नाम भी नहीं अक्सर लोगों को मालूम, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं। आपके पास 2.5 करोड़ अफराद हैं, 2.5 करोड़ एआई ट्यूटर्स होंगे, और ये आज मुमकिन है आपके पास। हार्वर्ड भी अब एआई ट्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ी अजीब व गरीब बन चुकी है और हमें पता नहीं है, हम अभी भी 200 साल पहले रह रहे हैं। तो वी नीड टू लर्न कि व्हाट इज हैपनिंग। एक आखिरी में जस्ट वन मोर मिनट, टेक वन गुड यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज में आज भी मैं ऑनरी लाइफ प्रोफेसर हूँ। आई गो देयर एंड टीच रेगुलरली देयर, एन ऑनरी लाइफ फेलो एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। एक यूनिवर्सिटी 130 नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं खाली एक यूनिवर्सिटी से। उसके एक कॉलेज से, ट्रिनिटी कॉलेज से 35 नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं। जस्ट वन कॉलेज 35 नोबेल प्राइजेस। इस्लामी दुनिया, पूरी इस्लामी दुनिया में एक भी नोबेल प्राइज आज तक साइंस में नहीं मिला उस काम पर जो इस्लामी दुनिया के अंदर किया गया हो। हाँ, सलाम साहब को मिला था, बट ही वर्कड अब्रॉड। जुहैर अहमद को मिला था, ही आल्सो वर्कड अब्रॉड, एंड सो ऑन। देयर आर 2 or 3 मुस्लिम्स, बट दे हैव ऑल वर्कड। तो हम उसका क्रेडिट नहीं दे सकते। तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। वी आर लिविंग in the darkness of ignorance and superstition. It is time to, and this applies not to Pakistan alone, it applies to apply the entire Islamic world. गाजा में जो मुसलमानों की पिटाई हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि एक छोटा सा मुल्क इसराइल है, कोई आबादी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सबको चक्कर दे सकता है। उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने समझ लिया है कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैटेंट्स पॉपुलेशन के लिहाज से इस वक्त इसराइल से आते हैं। तो माय कॉल, लास्ट वर्ड टू आवर लीडरशिप इज वेक अप। This is a different world. It is a world of knowledge. It is a world of science. It is a world of technology. It is a world of innovation and entrepreneurship. You have to change directions if you want to. And you have a window of 30 years. 30 साल की window है, because you have a very young population at the moment. This window will close in 3 decades. And these very young people who are a huge resource right now will become a huge burden. So wake up and move forward. Sir, thank you very much, sir, and I'll hand over to Sir Iftikhar for the rest of the proceedings. Thank you. Sir, I can only say sir Jazakallah khair, because जो आपने किया इसका अजर ये मुल्क आपको कभी नहीं दे सकेगा सर। इसका अजर अल्लाह ताला को दे सर। और हमारी दुआ है सर कि आप जैसे लोग इस मुल्क की मजीद शान बने, मुल्क की पहचान बने सर। बिकॉज आप सही कहें सर, हमारा मुल्क सर वंस यू आर इनसाइड द कंट्री तो दुख होता है सिस्टम को देख के, बट वंस यू आउटसाइड द कंट्री, लाइक मैं एम सेटिंग आउटसाइड सर, तो सिस्टम को बात से देखे सर और ज़्यादा दुख होता है। कब जब बाकी दुनिया को अब देखेंगे सर कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच के हम कहाँ खड़े हैं सर, तो रियली जो ना दिल रोता है बंदे का सर कि इतना अच्छा खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ताला ने क्या कमी छोड़ी सर। अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लोकेशन आप देखें खूबसूरत सर, ज़मीन देखें खूबसूरत, लोग देखें सर इतने खूबसूरत लोग हैं सर। इन यूएई से आप देखेंगे सर कि हर वो काम जो कि कोई कौम नहीं कर सकती वो काम पाकिस्तानी कौम करके दिखा देगी सर। और ये लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं यार कि पाकिस्तानी तुम लोग हो क्या चीज़, तुम सारे काम कर सकते हो। और वो यही क्वेश्चन करते हैं फिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है जब तुम सारा एज इंडिविजुअल यू आर वेरी वेरी गुड। सर प्रॉब्लम वही जो कि आपने बता दिया आपने सर कि हमारा प्रॉब्लम लीडरशिप है, हमारा प्रॉब्लम लैक ऑफ विजन है सर, टोटल इनडिफरेंस है, और आई वुड से कि लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन लैक ऑफ विलिंगनेस भी है सर। आप सही कह सकते टेक्नोक्रेट्स इसका हाल बनता है कि अगर हम सीरियसली इस मुल्क को एक बार हम अगर चलाना चाहें सर तो बात बन सकती। सर फ्लेम बहुत छोटी सी एफर्ट है सर, बहुत छोटी सी एफर्ट है उसमें सर। आई हैड टू गो थ्रू इट वेरी वेरी क्विकली सर। हम लोग बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन प्राइमरली ऑन स्कूल्स एंड एजुकेशन डेवलपमेंट, जहाँ पर हमने जैसे हमारा जिक्र किया सर, हम उसके 6 के 6 कार्डिनल्स को साथ लेके जाना चाहते हैं सर। बिकॉज अनलेस ये 6 कार्डिनल एक साथ तरक्की करें सर, स्कूल कभी डेवलप नहीं हो सकते। और वी आर फोकसिंग ऑन टीचर्स डेवलपमेंट, ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट सर। लाइक फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि जी हमने जो इंटीग्रेटेड स्कूल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया सर, इट्स अ बुक ऑलरेडी पब्लिश नाउ, और मैं आपसे इंशाल्लाह इसको शेयर भी करूंगा सर। आई वुड रिक्वेस्ट योर कमेंट्स ऑन दिस सर। सर हम लोग सर टीचर्स के 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देख रहे हैं सर। स्टेज 1 जो कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में सिर्फ जॉब स्किल्स की परफॉर्मेंस हो, टीचर आता है पढ़ाता है जाता है, आता है पढ़ाता चला जाता है सर। दैट इज द बेयर minimum level at which the teachers should be working, and that is where most of the teachers are working in Pakistan sir. कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई अपस्किलिंग नहीं है सर।
तो हमारा जो बेसिक लेवल जहाँ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, विच इज दी जॉब स्किल्स डेवलपमेंट, एटलीस्ट कम अज कम स्कूल्स जो स्किल्स रिक्वायर्ड है कम अज कम वो तो डेवलप करें टीचर्स की। उसके बाद नॉट एनफ, बिकॉज टीचर्स आर देयर not only to perform jobs skills, they are there to look after their professional development also, चाहे उनकी एजुकेशन हो, उनकी उनके डिप्लोमास हो, उनकी डिग्रीज हो, and after that you have to involve them into the administration also. Ultimately you can take them to leadership empowerment, and टीचर खुद डिसीजन ले सके कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को मैंने कैसे लेके जाना है सर। और सिमिलरली हम एक तरह के स्टूडेंट्स को भी हम सिमिलरली देयर आर 4 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। लर्निंग तो है, ग्रेड्स इंपॉर्टेंट तो है सर, बट थिंग इज इसके बाद भी तो बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है सर ना। सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट है, हम आईटी को देखते हैं, सॉफ्ट स्किल्स को देखते हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स को देखते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को देख रहे हैं। अल्टीमेटली हम उनको लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन पे लेके जा रहे हैं कि जो खुद अपने 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 करिकुलम को, अपनी लर्निंग को खुद लीड करें जाके वो लोग सर। साथ हम साथ सिलेबस को भी देख रहे हैं इंशाल्लाह। वी आर looking at how to improve the curriculum to integrate all the modern skills जैसे आपने जिक्र किया सर। तो इंशाल्लाह सर we will be in touch with you, इंशाल्लाह हम आपसे गाइडेंस भी लेते रहेंगे सर, और हम आपको तंग भी करते रहेंगे सर। आई एम श्योर कि सर आप में जो ना जहां में सर आपके आलिया साहब बैठी हैं, उनको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो शी इज वेलकम, शी शुड नॉट बी शाय। जी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? अनम्यूट कर देंगे। जी बिल्कुल। मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि आप यकीन करें आज हम जो सारे यहाँ से जा रहे हैं तो बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं, बहुत गाइडेंस और मोटिवेशन के साथ। और क्योंकि मेरा ताल्लुक इसी से है कि मैं एक एकेडमिक ऑथर हूँ, तो मैं टेक्स्ट बुक्स लिखती हूँ, तो इससे रिलेटेड मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अभी हमने कुछ बात की, जैसे आपने बताया वो क्वांटम कंप्यूटर्स की बात की हमने, और एक सिविलाइजेशनल चेंज की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो दुनिया में हो रही है और हम विटनेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सर आपके ख्याल में जो हमारा करिकुलम है उसमें वो क्या चेंज आना चाहिए? ये इंटेलिजेंट मशीन्स के दौर के अंदर वो कौन सी कॉग्निटिव स्किल्स हैं जो रिप्लेस हो जानी चाहिए, और हमारे करिकुलम में चेंज क्या आना चाहिए? अब वक्त के साथ साथ क्या तब्दीली आनी चाहिए? जो सबसे बड़ी चीज है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, और रादर देन रोट लर्निंग। फैक्ट्स तो हर जगह से आपको मिल जाते हैं, यू कैन डाउनलोड फैक्ट्स इन सेकंड्स यूजिंग चैट जीपीटी 5 और व्हाटएवर, तो हर चीज तो अवेलेबल है इस वक्त। लेकिन the ability to analyze issues, to critically look at them, and to have a problem solving approach, and to then have a creative thinking to be able to develop new ideas and new processes based on current knowledge, ये missing है। तो ये total change is not so much of a change of curriculum as a change of mindset। करिकुलम तो आप 5 मिनट में कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का, हार्वर्ड का, MIT का या स्कूल लेवल का कहीं से डाउनलोड कर लें, that will not make a difference। So you need to right teachers and you need to have the right approach of, चाहे वो ओपन बुक एग्जाम करें, आप बच्चों को कहें ठीक है जितने किताबें लाना चाहो ले आओ, सवाल ऐसे पूछेंगे उन्होंने प्रिंसिपल्स अगर सीख लिए हैं तो उसको वो अप्लाई कर सकें। The answers are not available in any book। The answers are available in your own mind if they have understood the principles and the ability to apply them। So it needs a radical change in of the way we train our students। और फिर blend करें जो ये इंटरनेशनल लेक्चर जो अवेलेबल है, दुनिया के बेहतरीन लेक्चर, जिस वजह से वेबसाइट का मैंने एड्रेस बताया, इस तरह और भी हैं। तो वहाँ अपने जो आप पढ़ाते हैं टीचर्स को सबसे पहले अवेयरनेस पैदा करें कि एक्सलेंट कोर्सेज अवेलेबल इंटरनेशनली, और उनको फिर हर उस्ताद को कहें कि उस्तानी को कि उसके अंदर अपने फिर कुछ खुद पढ़ाएं और कुछ उन कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करें ताकि बच्चे उन कोर्सेज से सीख सकें। इसी तरह इसीलिए मैंने तकरीबन खान एकेडमी के 3,500 लेक्चर जो हैं वो उर्दू में ट्रांसलेट करा के वो भी मौजूद हैं इस वेबसाइट के ऊपर। So we need to promote access to materials and integrate them, जो internationally available material, integrate them into our teaching system। Thank you so much, sir। बहुत शुक्रिया, highly obliged। Thank you। My pleasure। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, very kind of you, and Vice Admiral साहब, very nice to meet you, and I hope that we can continue to interact in the future। And I will be sending you वो जो मैं शेयर नहीं कर पा रहा था स्क्रीन पर, वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा।
there are 16 or 17 PowerPoint slides which have exact graphs and figures. So you can then balance whatever I was saying with those figures that I was talking about overtaking India, etc., etc. Inshallah, sir. Inshallah, sir. Sir, one last question, if you allow Sure. me. It was wonderful, sir, hearing you live here. Can you, sir, guide us how Flame can contribute in improving Pakistan's leadership and education culture? Basically, what you need to do is to reach the people who matter and who take political decisions, and create awareness of our. तो दो levels पे काम करना पड़ेगा. एक level पर कि you need to use your influence to our planners and to our leadership, the need for a radical change in approach and the need to move toward a technocrat government rather than the political government that we have. That is one part. The second part is to take quality education, whether it's school level or whether it's technical level. There are excellent courses available internationally. Through your magazines, create awareness of which are the best courses available, for instance, in technical and vocational education, जो international courses available हैं. इंडिया ने अपने वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कोर्सेज इस वक्त वीडियो कोर्सेज अवेलेबल कर रखे हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें वो खाली हमने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया. So there are separate websites that India has created for lower level technical vocational education, but there are other courses available from other places to create awareness of the existence of these courses and then encourage teachers to incorporate them into programs. And then very important linkages of our research with industry, the innovation ecosystem. मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो वेडनेसडे को आएगा about entrepreneurial universities, the news में आएगा, and I've written about 700-800 articles in national newspapers. 400 डॉन में आए हैं और तकरीबन 340 या 50 the news में आ चुके हैं, 400 जंग में आ चुके हैं. I keep writing to do my own little bit to create public awareness of the future directions of. So I can send you some of the links to those articles that I've written, and you are welcome to use them also in your magazine. Some of those articles that you find appropriate for your readership. Grateful, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Fi amanillah. Sir, thank you much, sir. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Allah Hafiz, sir. Thank you so much. Allah Hafiz. Fi amanillah.